हेलो एवरीवन, आज आम डिस्कसन करबा ओएसएसटीटी 2025 रो क्वेश्चन। तो जो मैंने अपकमिंग टीचर एग्जाम पाई प्रिपेयर होउछंती से माने निश्चित भाव में ए वीडियोटा को देखिए, सब्सक्राइब भी करदेवे। आउ या परे मु जेटी रो क्वेश्चन भी आनिबी हला। जेटी रो क्वेश्चन करबा, तापरे एसएसबी टीजीटी रो आमे क्वेश्चन करबा, तापरे ओएसएसटीटी रो जेते भी संभव आमे क्वेश्चन पेपर डिस्कशन करबा। ठीक अछि, चलंतु गोटे गोटे करी हम स्टार्ट करबा। प्रथमे आमे ओडिया सेक्शन को करबा। देखो प्रथम क्वेश्चन कहूची सत्व विधि आधार रे गठित शब्दटी चिन्हाओ हला। आषाढ़, आनुषंगिक, पाषाण, कषण। तो एठारे देखो आषाढ़ हो गला, पाषाण हो गला, कषण हो गला। ए तीनोटी कौनसी नियम न थाए। एटारे स्वाभाविक भाव स्वर व्यवहार है, स्वाभाविक भाव स्वर व्यवहार है। किंतु आनुषंगिक देख अनुसंगिक, आनुषंगिक है। तो एठारे जो अच्छी हर्षौ हर्षौ थिबारु ई सटी मूर्धन्य सरे परिवर्तन हो। तो एटा करेक्ट आंसर हो बी है, एटा हमर बी। नेक्स्ट, से बयस रे मो ठारू बड़ रेखांकित पदटी क्यों विभक्ति प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, सप्तमी। देखो कर्ताकार करे कौन होता है, प्रथमा विभक्ति होता है। तापर द्वितीय विभक्ति कर्मकारक होता है। तापर तृतीय विभक्ति सप्तमी विभक्ति कौन हो आमर अधिकरण कारक होता है, अधिकरण कारक। तो एटारे तृतीय ही हम हमर तृतीय विभक्ति कहीं लक्षणार्थे तृतीय होता है, लक्षणार्थे तृतीय होता है। लक्षणार्थे बा विशेष गुण जो विशेष गुण सान बड़ यहाँ जदि अच्छी तो आमर तृतीय विभक्ति है। ठीक अच्छे। क्वेश्चन नंबर 3, अकृत प्रत्यय द्वारा गठित शब्दटी को चिन्हाओ। तो कौन अच्छी क्रुध, क्रुध युक्त अ क्रोध, क्रू अक कारक, तापरे मान युक्त अ मान, गम जोगत गत। तो कौन होगा एठरे अप्रत्यय युक्त दुईटी आंसर आसुची ए एवं सी। ठीक अच्छे। नेक्स्ट जीवा क्वेश्चन नंबर 4, गोड़ तले न लागिबा रूढ़ीर अर्थ कौन कहूँ। अत्यंत आनंद अवस्था, व्यतिव्यस्त हेबा, तापरे भयभीत हेबा, अति अस्थिर भाव कहूँ। तो करेक्ट आंसर जो आमर कौन अत्यंत आनंद अवस्था है। तापरे आमे देखिबा, देखो क्वेश्चन नंबर 5 रु 9 आमर कौन कही अनुच्छेद। अनुच्छेद को निश्चित भाव में पढ़ा कथा, निश्चित भाव में पढ़ो, रिक्वेस्ट करुच्ची पढ़ो। कहीं आम यहीटा ही आमको मार्क देते आम केते भी प्रैक्टिस करू नहीं। कौटा आमर पेसेज है कि आमर पद्य गुड़ाक है, पोएम कि आमर जो अच्छी प्रोज और पोएट्री सेक्शन रु आसूची से आम केबे प्रैक्टिस करू नहीं, जहाँफल गोटे 2 मार्क पड़ी कमी जाए आउ से सिलेक्शन रु वंचित हो जाओ है। तो यहाँ को धीरे धीरे स्क्रॉल कर दूसरी, यहाँ पढ़ीदेव है। बहुत सुंदर आमर एटा एक्सट्रैक्ट देसी, तो पढ़ीदेव ताकू है। तो क्वेश्चन नंबर 5 कौन हम प्रत्याख्यात एकलव्य। एठारे प्रत्याख्यात अर्थ कौन एटा निजे पढ़ी कर। तो मुझे अनुसार कहीदे दूरीकृत है, दूरीकृत हो करेक्ट आंसर। तापर क्वेश्चन नंबर 9 को करदे एपटे है। क्वेश्चन नंबर 9 को करदे, व्यासदेवंकर कौन चिन्हवा लगी साहस नथिला। नैतिक साहसर विपुलता, मानविक श्रेयर विपुलता, एकलव्यर दुस्साहस, गुरुद्रोणक आचार्य पद। तो ये करेक्ट आंसर कौन बी करेक्ट आंसर है।
तापर देख 6 नंबर कौन कौन जड़े विद्यार्थी क्या बल परंपरागत समस्त नियंत्रण को लंघी जाई पारे निजर श्रम और साधना निजर श्रद्धा और विश्वास निजर ज्ञान और गरिमा निजर बुद्धि और विवेक तो करेक्ट आंसर बी निजर श्रद्धा और विश्वास मधु तार मामू घर को जाइए रेखांकित अंशटी क्यों पद विशेष्य विशेषण सर्वनाम अव्यय तो करेक्ट आंसर जो आम कौन तार है गोटे कौन सर्वनाम सर्वनाम है करेक्ट आंसर ये तो तुम जानूछ है क्वेश्चन नंबर 7 एकलव्यर दुस्साहस शास्ति को कौन बोली विचार करा जायछि सामाजिक न्याय आचार्य न्याय राजकीय न्याय साहित्यिक न्याय करेक्ट आंसर है डी साहित्यिक न्याय तापर क्वेश्चन नंबर 11 कौन कही देख क्वेश्चन नंबर 11 आसन सकाशे वृद्धे एड़े बाई बालके जेसने किरणक पाई तो देख जेसने अर्थ कौन जेपरी जेसने अर्थ जेपरी तो उपमावाचक शब्द लगी जेसने तो आम कौन उपमा अलंकार यार अर्थ यदि आम देखा बहुत सुंदर धाड़ी आसन सकाशे वृद्धे एड़े बाई वृद्ध लोक मैंने गोटे आसन पाइबापी से पागल है इच्छा बहुत एड़े बाई बालके जेसने किरणक पाई बालक माने छोट बालक माने जेपरी किरणक मीन्स खेलना खेलना ही देती है तो यहाँ आमर उपमा अलंकार क्वेश्चन नंबर 8 गुरु द्रोण से दिन एकलव्य को कहीं खुशी कुंडाई धरले नहीं तो आंसर है कौन सी है करेक्ट आंसर है यहाँ बाकी ऑप्शन गुड़ाक मुझे पढ़ुने क्वेश्चन नंबर 12 देख क्वेश्चन नंबर 12 तुषार धवल यह क्यों प्रकार समास निष्पन्न पद है क्यों प्रकार समास निष्पन्न पद देख तुषार परी धवल तुषार अर्थ बरफ बरफ परी धवल धवल अर्थ धड़ा परी आसला उपमान कर्मधार है तार व्यास वाक्य को जाना आवश्यक क्वेश्चन नंबर 13 आरण्य शब्दटी क्यों तद्धित प्रत्यय द्वारा गठित कौशी अ य ए है तो अरण्य युक्त अ है आरण्य है आमर अप्रत्यय तो ये करेक्ट आंसर है संबंध अर्थ जदि पचरा जाए यहाँ क्यों अर्थ बेले पड़े संबंध अर्थ देखा है ठीक अच्छे क्वेश्चन नंबर 17 सारला दास ओडिशार वाल्मीकि थिले रेखांकित अंशटी केउ पद है सर्वनाम विशेष्य विशेषण अव्यय आम निश्चित भाव जाचु यहाँ विशेष्य पद यहाँ जातिवाचक विशेष्य मन रख जातिवाचक विशेष्य यहाँ जातिवाचक विशेष्य भल मन रख तुलना जो करवा जातिवाचक विशेष्य होता है तुलना अर्थ है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 14 देख शुद्ध शब्दटी को बाछ मुझे चैनल रे शुद्धि अशुद्धि गोटे वीडियो कर देखीदेव आ शुद्धि अशुद्धि बहुत इम्पोर्टेंट होता है आम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रु है तो यहाँ कौन है मरुद्यान विरूपाक्ष बृहस्पति सर्वांगीण क्योंटा शुद्ध हूँ देख मरुद्यान मरुद्यान दुर्घ एवं भूल होगा विरूपाक्ष विरूप अखि जार है विरूप अखि जार विरूपाक्ष एटा समास बहुब्री समास है तापर बृहस्पति कौन किपर होता है बृहस्पति एटा भी भूल होगा एटा भी भूल होगा तो सर्वांगीण ठीक अच्छे आंसर डी क्वेश्चन नंबर 18 रामचंद्र रावण को मारी सीता को उद्धार कले यह क्यों प्रकार वाक्य देख उद्धार कले एटा गोटे आमर समापिका क्रिया किंतु मारीटा असमापिका क्रिया तार अर्थ गोटे समापिका क्रिया थे आम ताकू सरल वाक्य कही था एटारे गोटे समापिका क्रिया अच्छी आमर सरल वाक्य क्वेश्चन नंबर 15 कली उपद्रवे
त्यजी लोकालय शांति किए स्थले हजिले आश्रय एथरे क्यों अलंकार रही पूछी है। तो करेक्ट आंसर है आमर कौन उत्प्रेक्षा। हमारे देख उत्प्रेक्षावाचक शब्द की अच्छी है। उत्प्रेक्षा अलंकार देखिबो उत्प्रेक्षावाचक शब्द हमारा देखिबो इजीली फाइंड आउट करि परिबो है ना। क्वेश्चन नंबर 19 शुद्ध शब्द वाक्यटी को चिन्ह आरती मिनती दुहे जाला भौणी। देखो आरती भी भूल अच्छी मिनती भी भूल अच्छी एटा सब हर्षई हेबो। तापरे गोलोक बिहारी होता है एटा गोलोक बिहारी देछि एटा भी भूल एटा भी भूल। ए दुनिया रे निरोगी केही नाहंती हला निरोगी भी न थाए निरोग होई थाए हला। नुआ मंत्रिमंडल केबे हेबा जणा नै एटा ठीक अछि हला। देखो मंत्रिमंडल भी मन रखितो एटा भी शुद्ध शुद्ध रे पड़ि थाए। केवल जदि आमे मंत्री कहिबा एमती हिते दीर्घ हिते किंतु जेतले एटा समास होई थाए दीर्घई हर्षई रे परिवर्तन होई थाए हला। ठीक अच्छे। क्वेश्चन नंबर 16 को जीवा विशाल अक्षी जार से समस्त पदटी कौन हम आम पढ़ी विरूप अक्षी जार विरूपाक्ष विशाल अक्षी जार से विरूपाक्ष आमर विशाल अक्षी जार से विशालाक्ष होटा भूल है। तो क्वेश्चन नंबर 20 को देखते टे क्वेश्चन नंबर 20 कौन जति पढ़ा रूढ़ीर अर्थ कौन कौन जति पढ़ा रूढ़ीर अर्थ कौन माली जपिबा मेल खाइबा निजर करवा अति चतुर। तो क्रिकेट आमर करेक्ट आंसर कौन मेल खाइबा आमर करेक्ट आंसर है। 21 इंग्लिश सेक्शन को देखिबा हमें इंग्लिश सेक्शन इट इज 2 years डैश आई सॉ विवेक। देखो इट इज अच्छी आमर इट इज अच्छी प्लस गोटे टाइम पीरियड अच्छी तो निश्चित भाव में ये कौन लगी था सिंस लगी था यहाँ मन रखिथ है सिंस लगी था एटा आमर फॉर तो अनिर्दिष्ट समय पे लगी था फ्रॉम आफ्टर हेब नहीं है। 24 देखिए व्हिच पेयर इज डिफरेंटली प्रोनाउंस्ड प्रैक्टिस प्रैक्टिस राइट राइट स्वीट एटा देख एटा स्वीट नुहे एटा सूट स्विमिंग सूट जमती कोई जानती है है स्विमिंग सूट है किंतु एटा कौन उच्चारित हुए स्वीट भलिया एटा स्वीट तो यहाँ अलग अच्छी यहाँ उच्चारण स्वीट भाई होता है तार अर्थ स्वीट नुहे है। तो करेक्ट आंसर है कौन सी हो सन सन ठीक अच्छी यहाँ एका भाया उच्चारण हो ए बी डी किंतु सी अलग अलग हो। तो करेक्ट आंसर है कौन सी। आ फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी विषय में जब जानवर अच्छी गोटे जोड़े वीडियो कर देखीदेव जब भल लगे कह फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी विषय में आहरी करदेवी है। यहाँ आम टीचर एग्जामिनेशन बहुत पड़े एलटीआर तो आमर 5 मार्क पड़ता एलटीआर एग्जाम जो हाई स्कूल टीचर एग्जाम होता 5 मार्क्स आसला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देखिया द पेपर सेटर मेड द क्वेश्चन डिफिकल्ट है। देख यहाँ भी जब आम कह पेसिव फॉर्म रे कौटा अच्छी कौन देख तो आम आइडेंटिफाई करवा प्रथम कौन कह तो आमर वर्ब वर्ब को आइडेंटिफाई करवा तो यहाँ सब्जेक्ट सब्जेक्ट V2 अच्छी पास्ट सिंपल अच्छी पास्ट सिंपल अच्छी मीन्स है आमर कौन होता है ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ होता है आमर द क्वेश्चन ऑब्जेक्ट डिफिकल्ट जदि ऑब्जेक्ट उपर जदि एडजेक्टिव अच्छी भल मन रखो यहाँ आमर हो कॉम्प्लीमेंट है एसबीएसई पैटर्न रे अच्छी तो आम ऑब्जेक्ट को प्रथम लिखा द क्वेश्चन तो यहाँ डिटेल बते दूसरी ना तो यहाँ को ट्रिक माध्यम जल्दी कर द क्वेश्चन ऑब्जेक्ट आमर ए अच्छी ए ना द क्वेश्चन बाकी तीनोटे द क्वेश्चन अच्छी तो द क्वेश्चंस तो द क्वेश्चन आमर बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस रू आम लिखा है। तो क्वेश्चंस तो आमर पास्ट सिंपल पेसिव फॉर्म रे कौन बसी ऑब्जेक्ट उपर वाच वेयर बसी था वाच वेयर बसी था है। तो आमर सिंगुलर जदि ऑब्जेक्टा जिते आमर बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस रू बसे ताहले जदि द क्वेश्चन एटा को देखि आम द क्वेश्चन एटा जदि सिंगुलर इतले आम सिंगुलर यूज करबा वाच और जदि प्लुराल हेते प्लुराल यूज करबा ताहले एठरे वाच वेयर एदरे वाच वेयर नाही तो एठरे भी नाही हला तो वेयर एटा हिबा आमर करेक्ट आंसर द क्वेश्चंस देखो प्लुराल ताहले प्लुराल भार वेयर बसिबा एटा हिबा आमर करेक्ट आंसर। तापर आमर V3 बसी था जानि छ एटा V3 बसी था
तापर आम कौन करवा बाकी जो रहा आमर बाय द पेपर सेटर है तापर डिफिकल्ट डिफिकल्ट को आम लिखिकी लास्ट को आम बायफ्रेज लिखा है बायफ्रेज लिखा है करेक्ट आंसर तापर इंडिया स्कोर 175 रन्स डैश 6 विकेट्स एटा तो समस्त जानछ है कमेंट्री शुणुथबो जदी तो कौन होता है इंडिया स्कोर 175 रन्स फॉर है 6 विकेट है केते केते जन कमेंट्री भी करूथबो इंग्लिश रे कमेंट्री है तो जानूछ समस्ते वा तापर आमे करबा 26 नंबर कोन किछ देखा ट्राई टू सेव 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 रो हमर प्रयाल भावटा कोन कहूची आ बाकी हमको पढ़बार आवश्यकता नहीं है पुट बाय पुट इन पुट अप पुट ऑन देखो पुट बाय ही जो हमर करेक्ट आंसर आ गुटे देई थाए मन रखथबो पुट बाय भी होई थाए और ले बाय भी होई थाए एटा मन रखथबो है केते ले बाय दे देबो केते पुट बाय दे देबो है नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन कोन कहिस देखा द क्यूट creation of the creator is bright and beautiful तो पर creation is कौन कहूची the word opposite in meaning of creation is कौन कहूची antic annihilation तापरे arbitration कहूची alteration कहूची कोटा हिजबो निश्चित भाव रे एटा बी हिजबो annihilation ला annihilation creation means कौन सृष्टि ला creation means कौन सृष्टि आउ annihilation means संपूर्ण विनाश बा ध्वंस ध्वंस है तापर एंटिक रो अर्थ कौन होता है एंटिक एंटिक मीन पुरातन वस्तु को बाजे है आर्बिट्रेशन मीन्स मध्यस्थता तापर अल्टरेशन मीन्स परिवर्तन है नेक्स्ट तापरे कंडीशनल क्लॉज रे देछि गुटे देखो इफ आई केम इनटू फॉर्च्यून देखो इफ क्लॉज रे जदी v2 अछि हला सब्जेक्ट ऊपर v2 मींस पास्ट सिंपल रे जदी अछि आउ हमें आउ कोनोसिटा को देखिबा नहीं वुड परे v1 नहीं थे हला वुड परे v1 नहीं थे हला हेडा फार्मूला कंडीशनल क्लॉज ता फार्मूला जानले हेइबो आउ किछि नहीं सेतरे हला 28 देखो देयर आर ब्लैक क्लाउड्स इन द स्काई हला जदि पूर्व इंडिकेशन मिलूँ फ्यूचर इंडिकेशन जदि अच्छी किसी गोटे घटवार इंडिकेशन सूचना मिलूँ इंडिकेशन को मन रखो इंडिकेशन जदि अच्छी ताले निश्चित भाव बी गोइंग टू फॉर्म हेबो हला बी गोइंग टू प्लस v1 हला रेंटा एबे इथरे v1 बी गोइंग टू प्लस v1 बीटा इच गोइंग टू बसिबो तापर v1 बसिबो ए सब एते एलाबोरेट करू नहीं काहे कि ए हमर वीडियो लेंथी है जीवो जदि हमर डिटेल एनालिसिस जानिबा को चाहछंती स्टे कनेक्टेड टू माय चैनल हला हां से हमें धीरे धीरे इजीली बुझी जीवा 29 he said I have an answer to the question पूछ एटा हमें इनडायरेक्ट स्पीच करबा तो I have एटा I have अछि हला पास्ट प्रेजेंट सिंपल रे अछि हला एटा प्रेजेंट सिंपल चेंज टू पास्ट सिंपल हेइबो हैव टा हेड हेइबो देखो हला तो हेड बीन दे दीची एटा भूल हे गेला देखो एड रे अछि खाली वर्ब ग्रुप को देखिले ही जे एड रे भी अछि हेड अछि हला तापरे एड रे हैज देछि द प्रेजेंट सिंपल दे देछि हला त हमर आई हेड अछि ही हेड अछि किंतु आईटा कोन आईटा चेंज हे गिरी ही थे ना द एडा हिबो हमर करेक्ट आंसर डी हिबो तापरे 30 नंबर को देखिबा हला 30 Which letter in is silent in the word handsome कुछ देखो D letter silent है handsome कोई था हला handsome हला handsome तापरे handkerchief गुटे पड़ी था हला एटरे कौन था handkerchief ही थे handk R भी silent ही थे आउ D भी silent ही थे handkerchief ही थे एटा मन रखो एटा हमर ओटीटी रे पड़ी थला हमें डिस्कशन करी छला तापरे एईटा पढ़ी देबो टिके हला What was the belief of people during the Victorian age? There would be battles in future. There would be unlimited freedom for the human society. Wars would be fought on a large scale. Peace would prevail and happiness would engulf the whole world. The answer कौन है वो? कड़ा right answer है वो D.
ହେଲା 32 को देखिबा 32 the expression a brief interlude between past and future barbarism in the last sentence of passage means dash a short period of time between past and future acts of cruelty तापरे कुछ a short interlude between two great events an interval between cruel wars a dramatic performance during wars the answer कोड आइबो करेक्ट आंसर ए हैला 33 की देखिबा the author felt sad about the latter part of his life because he was nostalgic about his childhood. The world had not become prosperous. The author had not won any further victories. तापरे कुछ the world was painfully disturbed during that period of time. The correct answer is D. तापरे 34 को देखिबा 34 the word definitive used in the passage means defined final temporary incomplete correct answer final what was the author's view on the course for cruelty tyranny and injustice they would gradually diminish they would spread throughout the world tapre they would rapidly expand in the world tapre they would be temporary features the correct answer is A हला जदी कहबा हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर रे हमें पोएम एंड प्रोज को डिस्कशन भी करिवा पैसेज एंड पोएम को भी डिस्कशन करिवा तो एठी रहला देखो हमर पोएम ए पोएम को भलो रीड करि देबो ए क्वेश्चन आंसर गुडा को करबो निजे हला तो मु आंसर कहि दउची क्वेश्चन गुडा को पढि दउची What is considered the sweetest song in the violence tomb by the poet? Hope, the song of the bird, silence, the sound of the chilliest land. Correct answer A. Hope. Next, 37. It in the last line of the poem refers to this: the poet, the land, the hope, the soul. Correct answer C. The hope. Next, 38. Which of the following word means not easy? Gale, sore, avast, extremity. Correct answer B. Sore. Next, what according to the poet does hope do without words? Perches on the soul, flies away, sings the tune, stops suddenly. Correct answer C. Sings the tune. 40. Hope in the poem is compared to a butterfly, an insect, a kite, a bird. Correct answer D. A bird. ठीक तापरे जीवा नेक्स्ट 41 नंबर क्वेश्चन हाथी झुली झुली चलुची तो किपरि चलुची यदि किपरि यदि आमे करिवा हमर क्रिया विशेषण होइबो हला हेडवर्ब जोटा को कहिता हमें हला हेडवर्ब हला नेक्स्ट प्रतिदिन खरा टाणा होची रेखांकित पदटी केउ समास प्रति लागि छि देखो प्रति अव्यय पद अव्यय भाव समास होइबो तापरे 42 देखो गति शब्द रे केउ कृत प्रत्यय जो होइसे हम पढिथिले गम जो गति ऊपर पढिथिले गम जो गति गति थे तो ती धातु होइबो हमर करेक्ट आंसर बा कृत प्रत्यय होइबो हमर करेक्ट आंसर तापरे 46 कोछि ओडिया रु गजा एटा तमा जानिछ जन्म रु चतुर तापरे शुद्ध शब्दटी को बाछ कोछि देखो शुद्ध शब्दटी को बाछ व्यवहारिक धनिक समीचीन निरूपमा तो करेक्ट आंसर है जो कोन सी समीचीन धनिक देखो केवल यदि हमें धनी लिखिबा एठी धनी क यदि लिखले हला शुद्ध युवा हमर कोन धनिक एटा होई थाए व्यावहारिक
है एटा हिबा हमर निरुपमा है। तापरे 44 नंबर क्वेश्चन देखिबा पवन एटा तो समस्त जानूछ पो युक्त न पवन तापरे एई अनुच्छेदटी को रीड करदेव है मु स्क्रॉल कर दूची धीरे धीरे आटा निजे करने को चेष्टा करिवो केते मार्क रखुछ देखिया है। 47 नंबर क्वेश्चन कोन कहूची किए पानी फटका परी पवन रे उठे और पवन रे मिलाई जाए बोली कहा जाइछि अभ्यास भय स्वप्न दुख करेक्ट आंसर डी। नेक्स्ट निम्नलिखित क्योंटी गोपीनाथ महांती रचना नुहे कला शक्ति दादी बुढ़ा अपहंस बाई महांती पांजी एटा जीव बाई महांती पांजी है। तापरे 52 तद्धित प्रत्यय द्वारा गठित शब्दटी को चिन्ह होउछि पाठुआ पिता क्षोभ पढ़ुआ है पाठ युक्त हुआ पाठुआ एटा जीव हमर करेक्ट आंसर है। एटा गोटे शब्द शब्द सहित जदि प्रत्यय लागले ताको हम तद्धित प्रत्यय कहिताऊ है तद्धित पद कहिताऊ है। तापरे नेक्स्ट 53 कहिदबा तुम्हें जदि नंदनकानन जीव तेबे सिंह सफारी देखिबो है कि प्रकार वाक्य देखो एटा एटा जदि अछि देखो जदि तुम्हें जदि नंदनकानन जीव जदि एहा को आमे हला ए वाक्य को आमे देखिबा ताहेले एटा इनकम्प्लीट होउछि आश्रित वाक्य कहबा आमे इंग्रजी रे कहितो कोन सबऑर्डिनेट क्लॉज कहितो ना तो यदि सबऑर्डिनेट क्लॉज अछि और गोटे मेन क्लॉज अछि ताहेले से हमर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हे थाए तो एठिरे भी जदि अछि एटा आश्रित वाक्य एटा हिबा हमर तुम्हें जदि नंदनकानन जीव तेबे सिंह सफारी देखिबो तार अर्थ एटा तुम्हें बोथ क्लॉज पाई बा बोथ वाक्य पाई कर्ता अटे तुम्हें सिंह सफारी देखिबो जदि कहिबा तो कंप्लीट सेंटेंस होउछि पूर्ण वाक्य होइला किंतु एटा आश्रित वाक्य है तो गोटे मेन क्लॉज गोटे सबऑर्डिनेट क्लॉज बा गोटे आश्रित वाक्य और गोटे मुख्य वाक्य जदि थिबो ताको हम जटिल वाक्य कहिथौ है। तापरे 49 क्वेश्चन को देखिबा निम्नलिखित पदटी रे केव अलंकार प्रयोज्य भैरव आरबे रेबा देई लंफ जनमाय जन मानसे प्रकंपा है तो एठरे अनुप्रास अलंकार हेछि जोटि हम कहिथौ अलिटरेशन जदि मु कहिदिले ना तो बारंबार कौन होता है व्यंजन वर्णर उच्चारण होता है बा थाए देखो ज केमती अछि देखो एठरे हला भैरव आरबे ब देखो देइछि हला तो एठरे हमर कोन हेइबो हमर अनुप्रास अलंकार हेइबो। नेक्स्ट कहिबार इच्छा को एक पदर प्रयास करले कोन हेबो हला एटा विवक्षा है विवक्षा 54 हार बेल मगध जय करथिले हला मगध एठारे कोन हला मगध कर्म आकार रे काम करूची तो कर्म कारक होइबो हमर करेक्ट आंसर हला। नेक्स्ट केही रही नाही रहिबे नाही भवरंग भूमि तले सर्वे निज निज अभिनय सारी बाहुडीबे काल बोले एई कवितांशटी क्यों छंदरे रचित 51 रो करेक्ट आंसर इज सी बंगलाश्री है। नेक्स्ट संपद काले सर्वे सखा रेखांकित पदटी विभक्ति निर्णय कर द्वितीय पंचमी षष्ठी सप्तमी तो सप्तमी विभक्ति हो कालाधिकरण देखो काल भी दे दी संपद काले कालाधिकरण अधिकरण कार्य करे सप्तमी विभक्ति होता है जानी है। तापरे राइस एंड दाल देखो सब्जेक्ट वर्ब एलिमेंट आसला राइस एंड दाल दैट्स माय फेवरेट फूड कहूची है तो प्लुराल 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 हेबो नै सिंगुलर हेबो हमरा करेक्ट आंसर एटा क्लोजली रिलेटेड नाउन एटा सिंगुलर सब्जेक्ट एटारे सिंगुलर हेबो एबे सिंगुलर वर्ब रहिबो इच 57 माय सन बॉट द बस टिकेट यस्टरडे कहूची देखो एटारे भी से या पैसिव फॉर्म बॉट देछि v2 सब्जेक्ट ऊपर v2 देछि देखो तो हमें कोन आइडेंटिफाई करबा वॉच वेयर देखो एथरे वेयर वेयर ठीक अछि हला बीइंग तो प्रोग्रेसिव आसे तो डायरेक्ट हमें डी को कर देबा हला। 58
इंग्लिश इज एन इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल लैंग्वेज बिकज इंटरनेशनल लैंग्वेज है कि इट इज ए लिंक लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड है पूरा वर्ल्ड और कंट्री मान को लिंक करुची ए लैंग्वेज द्वारा आम लिंक रही पारुछु है बुझीगला तो एटा हिबा हमर करेक्ट आंसर ए हिबा हमर करेक्ट आंसर तापर 59 हमारा है पैसेज रिगार्डिंग है जो पैसेज को देखि देबला गुलिभर ट्रैवल एटा गुटे हमर एक्सट्रैक्ट के देछि 59 गुलिभर ले देयर bewildered. The word bewildered here means dash pleased, happy, confused, panic. What will be the correct answer? Correct answer will be C. 60. Gulliver could see but could not rise from the ground because dash. He was terribly tired. He was tired to the ground. He was mortally afraid of the Lilliputians. His hair tied to the ground. Correct answer B. Next 61. Gulliver reached the shore dash walking, running, swimming, rowing. Correct answer swimming. तापर पोएम को रीड कर दो देखो डेफिनेटली पोएम को पढ़ी करी एटा आंसर करिवो हला हर मैन इज हम्बल MEIN मैन रो अर्थ कोन स्ट्रीम इम्पोर्टेंट अपीयरेंस किसेस करेक्ट आंसर C appearance the shop deals देखो डील्स लागले इन ही देला फिक्स प्रिपरेशन मान रखियो डील्स इन तापर 66 होची 66 टेल मी व्हाट यू थिंक ऑफ इट हला अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज डैश क्लॉज रिलेटिव क्लॉज रे व्हाट लागे नहीं हला रिलेटिव क्लॉज हेबो नहीं अ नाउन कंडीशनल क्लॉज रे इव लागी थे हला एडवर्ब क्लॉज वर्ब रो परे परे ही हमारा एडवर्ब क्लॉज ता थाए एटा नाउन क्लॉज इज हमरा करेक्ट आंसर 67 a test of listening competition is a test of dash receptive skill productive skill तापरे hearing skill phonic skill पूछी a test of listening टा को स्किल है वो डेफिनेटली एटा receptive skill है वो नेक्स्ट 68 find out the pair differently pronounced weak देखो एटा रेन नहीं थे एटा रेन नहीं थे हला एटा ये हमर करेक्ट आंसर साउंड ठीक अछि हियर ठीक अछि एटा अलगा होछि हला तापरे हमें 69 को देखिबा आई स्पेन इज ए सब स्किल ऑफ डैश आई स्पेन हमें देखिबा रीडिंग रे हमें स्पेन करथौ हला आई स्पेन रीडिंग रे करथौ तापरे 62 बर्ड्स आर साइलेंट बिकॉज़ इट इज द डैश टाइम एटा मोर पोएम रिलेटेड क्वेश्चन अछि करेक्ट आंसर इज हमरा डी नाइट है 63 whom does the poet compare the moon with high queen pass mine correct answer B queen 70 language acquisition requires as constant practice exposure only practice only both exposure and practice correct answer D both exposure and practice वर्तमान हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस रे डिस्कशन करबा 31 क्वेश्चन कहूची व्हाट डज द टर्म सिंगल सिटीजनशिप इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिग्निफाई कहूची ए कहूची सिटीजनशिप ड्युअल सिटीजनशिप राइट एटा तो हमर यूएसए रे लागू होए तापरे जति हमें कहबा सिटीजन्स ओ लॉयल्टी टू स्टेट गवर्नमेंट एटा हमर यूएसए रे हला स्टेट गवर्नमेंट रे गुटे थाए सेंट्रल गवर्नमेंट रे गुटे थाए हला तापरे सी नंबर कहूची ऑल सिटीजन्स एंजॉय नेशनल सिटीजनशिप ओनली कहूची एटा जे हमर करेक्ट आंसर टी कोन गोटी सिटीजनशिप डिपेंड्स ऑन लोकल गवर्नमेंट एटा हेबो नै टीबी हेबो नै सिटीजनशिप रेगुलेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट हम इंडिया सेंट्रल रेगुलेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट हला हमर जो सी कहूची सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा रेगुलेटेड होइते जेडा की अंडर मन कौन कहबा यूनियन लिस्ट अछि यूनियन लिस्ट तो हमें ऑल सिटीजन्स एंजॉय नेशनल सिटीजनशिप ओनली
सी नंबर हो करेक्ट आंसर 75 प्रेशर ग्रुप्स इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट पॉलिसीज मेनली थ्रू डैश कुछ यूजिंग कलेक्टिव पब्लिक प्रेशर तापर स्टैंडिंग फॉर डायरेक्ट इलेक्शन एटा पॉलिटिकल पार्टी मानकर काम पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन रे स्टैंडिंग करती एडमिनिस्ट्रेटिंग लेजिस्लेटिव डिबेट्स कहार काम आमर लेजिस्लेटिव मेंबर मानकर काम लेजिस्लेटिव मेंबर मानकर इलेक्टेड बॉडी टू द लेजिस्लेचर तांकर काम फ्रेमिंग सुप्रीम कोर्ट जजमेंट एटा आमर जुडिशियरी रे काम हला तो करेक्ट आंसर इज आमर कोन यूजिंग कलेक्टिव पब्लिक प्रेशर इज आमर करेक्ट आंसर नेक्स्ट which of the following reflects India's commitment to global cooperation हला global cooperation related कोडा देखो withdrawal from multilateral groups participation in UN peacekeeping तापरे boycotting international forums तापरे isolation from global treaties देखो एटा ए सी एंड डी एटा हमर कहूची ऑपोजिट टू ग्लोबल कोऑपरेशन विथड्रॉल फ्रॉम मल्टीलेटरल ग्रुप्स टू विथड्रॉल हेइबा हमें बॉयकॉटिंग इंटरनेशनल फोरम को हमें बॉयकॉट करिबा आइसोलेशन फ्रॉम ग्लोबल ट्रीटीज ला ग्लोबल ट्रीटी जो होता है सेटा में अलगा हेइबा ए सब हमर कोन कहूची ऑपोजिट टू ग्लोबल कोऑपरेशन बट पार्टिसिपेशन इन यूएन पीसकीपिंग इज related to global cooperation 72 number question which directive principle of state policy DPSP guides the state to promote equitable distribution of resources हमर जो रिसोर्सेस अछि संबल अछि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन सम बंटन होई पाए सुसम बंटन होई तो को डीपीएसपी रो कहूची दा प्रमोशन ऑफ आर्टिस्टिक एक्टिविटीज देखो प्रमोशन ऑफ आर्टिस्टिक एक्टिविटीज रे हमर आर्टिकल केते रे जीवो आर्टिकल 49 रे जीवो आर्टिकल 49 कहूची प्रमोशन ऑफ मॉन्यूमेंट्स कहूची हला मॉन्यूमेंट्स आर्टिस्टिक एक्टिविटीज तापरे बी कहूची कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन फ्यू हैंड्स हला किछि लोकन को हाथ रे हमर सबु संपत्ति रहइबो हेड तो हमर प्रमोट करे नहीं या को प्रिवेंट करे एटा भी हेबो नहीं ए हेबो नहीं बी हेबो नहीं तापरे सी कोन कहूची ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत एटा हमर आर्टिकल 40 एटा हमर पंचायती राज सिस्टम विषय कहूची मिनिमाइजिंग इनकम इनइक्वालिटी हला इनकम इनइक्वालिटी को मिनिमाइज करिबा हला इक्वल रहू नाही सेटा को कम करिबा सेटा को कम करले हमर इक्वालिटी आसी जीवो तो एटा हमर आर्टिकल केते 38 2 रे आसी आर्टिकल 38 2 रे आसी हला तापरे हम देखि देबा 77 नंबर क्वेश्चन को देखि 77 क्वेश्चन नंबर 77 which architectural development best illustrates the Gupta period shift towards a classical Indian temple style क्यों पीरियड रो हमर टेम्पल तैयारी करबा आरंभ होइतला कंस्ट्रक्शन आरंभ होइतला जति कहिबा गुप्त पीरियड एटा भी परीक्षा रे आसे इंट्रोडक्शन ऑफ फ्री स्टैंडिंग पिलर कहिछि एटा मौर्य पीरियड रे एटा मौर्य पीरियड एटा हेबो नै यूज ऑफ रॉक कट चैत्य विथ पैरेल हॉल्टेड रूफ कहछि एटा भी हेबो नै एटा हमर अर्ली बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर रे आसीबो हला तापरे सी को मार्जिन्स ऑफ स्क्वायर सैंक्टम विथ मोडेस्ट शिखर हला एटा जिबा हमर मंदिर गुडा करे शिखर रहे हला तापरे कंस्ट्रक्शन ऑफ मैसिव भोटिव स्तूप इन स्टोन कहछि एटा भी हमर वैदिक पीरियड रो अटे और तार कंटिन्यू थिला हमर मौर्य पीरियड पर्यंत हला तो एटा जिबा हमर गुप्त पीरियड रो सी नंबर ऑप्शन तापरे 73 देखिबा 73 the cabinet mission plan failed mainly because of dash disagreement over the grouping of provinces aid is our correct answer lack of support from princely state refusal of Britain to grant domain status
टू ग्रांट डोमेन स्टेटस आम के चाहूला कि रिफ्यूजाल ऑफ ब्रिटेन जदि आम डोमेन स्टेटस चाहता तो से रिफ्यूज कर न था पुअर ऑर्गेनाइजेशन बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस पुअर ऑर्गेनाइजेशन नथिला तो ए हो आमर करेक्ट आंसर 74 कौन कौन देखिए which structural factor most contributed to the outbreak of the first world war outbreak रो मुख्य कारण कोटा कुछ decline of industrial competitions among European powers कुछ एटा हमर हबो नै इंडस्ट्रियल कंपटीशन among decline ही रिड्यूस ही थिला कि यूरोपियन पावर्स मन कंपटीशन एटा बढ़ी थिला एटा बने alliance system created rigid block of military commitment एटा जे हमर करेक्ट आंसर आदा गोटे पटे थिले हमर कोन ट्रिपल एंटेंट ट्रिपल एंटेंट क्यों क्यों माने थिले फ्रांस थिला रशिया थिला हमर के थिले यूनाइटेड किंगडम हला एटा हमर ट्रिपल एंटेंट थिले आ ट्रिपल अलायंस रे के थिले ट्रिपल अलायंस रे थिले हमर के ट्रिपल अलायंस हमर थिले जर्मनी थिले तापर ऑस्ट्रिया हंगेरी तापर हमर के थिले इटली हला तो यहाँ दुईटा ब्लॉक थिला हला एटा एमानकर मध्य जो प्रतिद्वंदिता है कंपटीशन है साम्राज्य विस्तार पाई तो यहाँ गोटे मुख्य कारण था मोर फर्स्ट वर्ल्ड वार होगापी है विड्रॉल ऑफ द ओटोमन एम्पायर फ्रॉम बल्कान पॉलिटिक्स एटा भी हेबो नै एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन अक्रॉस यूरोप एटा भी हेबो नै है एटा भी हमर हेबो नै है नो एक्सपेंशन है नथिला डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन अक्रॉस यूरोप से बोले एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन अक्रॉस यूरोप जो कहूँ एटा एक्सपेंशन है नथिला 78 नंबर क्वेश्चन आर्यभट्ट कंट्रीब्यूटेड टू मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी इज बेस्ट demonstrated by this test emphasis on lunar cycles for ritual ceremonies calculation of pi and expansions of earth rotation advocacy of geocentric planetary arrangement introduction of new script for science text for scientific text भी बीज ब्रह्म तापर देखा 79 कौन कौन देखा which administrative change followed the British acquisition of Diwani rights in Bengal 1765 direct crown rule replaced company authority एटा है नथिला एटा हमर 1857 जो विद्रोह होइतला सिपाही विद्रोह हला सेते बेले हमर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 अनुसार डायरेक्ट क्राउन रूल होइतला हला डायरेक्ट क्राउन रूल होइतला एटा है तो कंपनी गेट राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू एंड एडमिनिस्टर सिविल जस्टिस एटी जो हमर करेक्ट आंसर नवाब रिगेन ऑटोनॉमी ओवर प्रोविंशियल फाइनेंस रिप्लेसमेंट सेटलमेंट सॉरी परमानेंट सेटलमेंट वाज इमीडिएटली इंट्रोड्यूस एटा त हमर केते केमे हितला 1793 रे हितला 1793 एटा लॉर्ड कॉर्नवालिस आनिथिले लॉर्ड कॉर्नवालिस एटा भी करेक्ट आंसर है जो हमर कोन बी कंपनी गेन राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू एंड एडमिनिस्टर सिविल जस्टिस हला एटा पड़ी थाए मन रखबो इलाहाबाद ट्रीटी हिसाब रे हला ईस्ट इंडिया कंपनी कोन दीवानी राइट्स पाइथिले आउ बेंगाल बिहार ओडिसा रु से माने दीवानी राइट कलेक्शन करिवार पावर से मानकर थिला शाहजहांस आर्किटेक्चरल स्टाइल इज बेस्ट डिस्टिंग्विश्ड बाय as muted ornamental style and minimal floral carving कौची देखो मिनिमल है बने हाईली हला हाईली डोमिनेंस ऑफ सैंडस्टोन विथ लिमिटेड मार्बल वर्क एटा हमर अकबर का समय रहउतला अकबर का समय रहउतला एटा बने स्ट्रक्चरल एक्सपेरिमेंटेशन विथ इरेगुलर लेआउट्स कौची हला इरेगुलर लेआउट्स कौची एटा हमर इरेगुलर नइकरी इरेगुलर लेआउट्स माने कोन करथले व्हाइट करथले एटा भी बने रिफाइन सिमेट्री एंड एक्सटेंसिव व्हाइट मार्बल वर्क एटा जो हमर करेक्ट आंसर
ହେଲା ତାପରେ ଦେଖିବା आईटी नंबर क्वेश्चन को देखि देबा आईटी which factor was most critical in linking diverse Indian group into a shared national consciousness after 1857 spread of western education and print media एट इज आमर करेक्ट आंसर एमर्जेंस ऑफ लोकल ट्राइबल अपराइजिंग से बना कि डिक्लाइन ऑफ इंडियन मर्चेंट कम्युनिटी से बना एक्सपेंशन ऑफ प्रिंसली स्टेट ऑटोनॉमी भी से बना है करेक्ट आंसर ए 83 who presides over the joint session of parliament when both houses meet together speaker of the lok sabha chairman of the rajya sabha president of india prime minister of india कौन करेक्ट आंसर केटा हिजो हमर ए हिजो हमर करेक्ट आंसर बी कहीं माने चेयरमैन ऑफ राज्यसभा तो बोथ हाउसेस रो मेंबर नुहंती हैला लोकसभा रो मेंबर नुहंती कि राज्यसभा रो मेंबर नुहंती से कहीं की हैला प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये सम्मान करंती जॉइंट सिटिंग रो सम्मान करंती हैला जॉइंट सिटिंग रो से सम्मान करिवे किंतु प्रेसिडेंट करिवे नहीं डकाइबे जॉइंट सिटिंग डकाइबे किंतु प्रेसिडेंट करिवे नहीं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की हमर मेजोरिटी पार्टी रो लीडरशिप हैला ए हिजो हमर करेक्ट आंसर तापर देखिबा 84 which of the following is a function of the state legislative assembly state legislative assembly रो फंक्शन डा कोटा पासिंग नेशनल लेवल लॉस स्टेट कहीं ये करिवो अप्रूविंग एटा देखो हमर एलिमिनेशन आराम से करि अप्रूविंग स्टेट बजट प्रपोजल एटा हेबो अपॉइंटिंग हाई कोर्ट जज को किए अपॉइंट करंती हमर प्रेसिडेंट अपॉइंट करंती आर्टिकल 217 रे एटा लिखा है कंडक्टिंग इंटरस्टेट नेगोशिएशन हला एटा भी हमर हेबो नाही 81 को देखिबा 81 कोन कहि फिरोज शाह तुगलक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स differed from those of Alauddin Khilji because Firoj dash restricted state interference in revenue collection restricted कौची तापरे बी गण कौची impose strict control over merchant and traders ए बोर्ड भूल हो से कौन करथिले स्ट्रिक्ट रेवेन्यू कलेक्शन करथिले स्ट्रिक्ट रेवेन्यू कलेक्शन रे से स्ट्रिक्ट थी हला स्ट्रिक्ट कंट्रोल कौची कंट्रोल करिवारे स्ट्रिक्ट थिले नहीं हला रेवेन्यू कलेक्शन रे एवं कण मार्केट रेगुलेशन ऑन मर्चेंट हला मार्केट रेगुलेशन ऑन मर्चेंट एंड ट्रेडर्स एथिरे स्ट्रिक्ट थिले हला इंपोज स्ट्रिक्ट कंट्रोल करू नथले बोथ आर करेक्ट इनकरेक्ट हला रेस्ट्रिक्टेड स्टेट इंटरफेरेंस इन रेवेन्यू कलेक्शन दैछि इंपोज स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर मर्चेंट एंड ट्रेडर्स emphasized welfare measures and public works एटा जे हमरा करेक्ट आंसर हला डी expanded the use of spices in provincial governance एटा हमरा फिरोज शाह तुगलक करूनथले एटा अलाउद्दीन खिलजी 85 नंबर क्वेश्चन देखिबा which constitutional amendment gave constitutional status to panchayati raj institutions 61st amendment act 73rd amendment act 85 amendment act 101st amendment act correct answer is कौन बी ही जीव हमर करेक्ट आंसर ला पंचायती राज सिस्टम 73rd amendment act 61 amendment act कोडा थिला वोटिंग एज को लोअर करा जितला 21 टू 18 करा तापरे 85th amendment act कहूची एससी एसटी मानकर कौन एसटी एससी मानकर आमर प्रमोशन रिगार्डिंग प्रमोशन जॉब रे आमर प्रमोशन लगा प्रमोशन तापरे 101st इटाला जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स ना रिलेटेड तो करेक्ट आंसर है जो आमर कौन 85 बी ही जो आमर करेक्ट आंसर तापरे 86 नंबर क्वेश्चन जीवा which map is generally used to study population density political map रे कोन थिबो हमर कंट्री यदि वर्ल्ड मैप जदि कथा कहबा कंट्री गुडा को थिबो वर्ल्ड मैप रे यदि इंडियन मैप कहबा स्टेट थिबो हला यदि हमर गोटे स्टेट रो गोटे हमर पॉलिटिकल मैप कहबा से डिस्ट्रिक्ट रे डिस्ट्रिक्ट थिबो हला
एटा हमर कौन एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री थाए एटा पॉलिटिकल मैप रे दर्शाई थाए तापर बी नंबर इकोनॉमिक मैप रे आमे कौन करथाउ हला आमे रिसोर्स गुडा को दर्शाई थाए रिसोर्स गुडा को दर्शाई थाए तापर रिसोर्स गुडा को दर्शाई थाए इंडस्ट्रीज गुडा को दर्शाई थाए इंडस्ट्रीज ट्रेड रूट गुडा को देई थाए हला एटा थीमेटिक मैप है हमर करेक्ट टोपोग्राफिकल मैप रे कोन थाए हमर कंटूर लाइन गुडा को थाए कंटूर लाइन भी पड़े हला मन रखिबो 90 नंबर क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल हैज डेवलप्ड द पीक्यूएलआई फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इन इंडेक्स गोटे अछि अमर्त्य सेन तापरे मोरिस डी मोरिस महबूब उल हक तापरे एडम स्मिथ देखो अमर्त्य सेन एंड महबूब उल हक एमाने एसडीआई सहित ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जोटा यूएनडीपी काढी थाए ला एटा 1990 रे प्रथम एटा काढी थी ना आ तापरे जदि हमें कहबा एडम स्मिथ फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स तो डी मोरिस डी मोरिस इज हमारा करेक्ट आंसर तापरे 87 व्हिच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑरोरा बोरेलिस ना मेसोस्फीयर ओजोनोस्फीयर एक्सोस्फीयर तापरे कुछि आयोनोस्फीयर करेक्ट आंसर है हमर कोन आयोनोस्फीयर हला आयोनोस्फीयर एटा थर्मोस्फीयर रो गोटे पार्ट ऑफ थर्मोस्फीयर रो पार्ट एटा तापरे मेसोस्फीयर जदि कहबा हमें ओल्डेस्ट लेयर एटा ओल्डेस्ट लेयर ओजोनोस्फीयर को उधर था स्ट्राटोस्फीयर था स्ट्राटोस्फीयर हला तापरे एक्सोस्फीयर टा आउटमोस्ट लेयर आउटरमोस्ट लेयर एटा आउटरमोस्ट लेयर हला तो करेक्ट आंसर है हमर कोन आयोनोस्फीयर डी है हमर क्वेश्चन नंबर 91 रेपो रेट इज डिसाइडेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एटा हमर कोन काडे फिस्कल पॉलिसी तापरे सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ये कौन करे स्टॉक मार्केट एंड बॉन्ड स्टॉक मार्केट एंड बॉन्ड कथा बुझे तापरे सी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है जो हमारा करेक्ट आंसर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी है तापरे 88 देखि देबा 88 which factor is responsible for increase in density with depth in earth interior high pressure high temperature रे कोन है हाई टेम्परेचर रे डेंसिटी डिक्रीज होता है आ हाई प्रेशर रे डेंसिटी गेन होता है डेंसिटी विथ डेप्थ इन अर्थ इंटीरियर एज हमर कर हाई वोल्केनिसिटी हेबा नहीं हाई माउंटेन्सिटी हेबा नहीं 92 which of the following physiographic divisions of India is each one of the most stable land blocks 92 which of the following physiographic division of India is one of the most stable land block stable peninsular plateau एटे जो हमर करेक्ट आंसर हला हिमालय स्टेबल नु स्टिल राइजिंग तापरे पूर्वांचल इज आल्सो स्टिल राइजिंग स्टेबल नु तापरे नॉर्दर्न प्लेन्स भी स्टेबल नु हला एलुवियल सोइल सबले हला जमा होची एटा स्टेबल नु हला तो हमर इबा पेनिनसुलर प्लेटू इबा करेक्ट आंसर तापरे 89 कोन कहै देखबा which of the following regions of India has the highest potential of groundwater development Deccan Trap northern west region northern plain कुछ ईस्टर्न घाट कुछ देखो ईस्टर्न घाट तो है ईस्टर्न घाट रे कोन होची माने घर पर्वत रु पानी रैपिडली रन ऑफ होची पार्कुलेट करू नहीं एटा वाटर पार्कुलेट मींस पानी भूमिगत है वाटर ऊपर पार्कुलेट हे पारू नहीं काहे रन ऑफ हो जाए तापर डेकान ट्रैप भी हेबो नहीं हार्ड सोइल तो एटा भी पार्कुलेट
करि पारिनि नॉर्थ वेस्ट रीजन पूछी नॉर्दर्न प्लेन पूछी नॉर्दर्न प्लेन हे हमर करेक्ट आंसर नॉर्थ वेस्ट रीजन तो हमर सेमी एरिड रीजन हला लेस रेनफॉल होता है एठारे लेस रेनफॉल होता है एठारे तो एटा भी हेबन करेक्ट आंसर दिबा 93 which one of the following river is the longest कृष्णा जदि हमें कहबा अप्रोक्स 1400 किलोमीटर्स कावेरी जदि कहबा 1312 किलोमीटर्स तापरे नर्मदा जदि कहबा 851 अप्रोक्स किलोमीटर तापरे कहूची महानदी एटा 800 अप्रोक्स किलोमीटर तो अप्रोक्स 800 किलोमीटर तो करेक्ट आंसर है जीवा ए नेक्स्ट जीवा 94 क्वेश्चन नंबर 94 which of the following term is used for shifting cultivation in India मिल्पा तापरे कुछ लैडेंग तापरे कुछ मैसूर तापरे पेंडा है जो हमारा करेक्ट आंसर ना 18 एबोने मिल्पा को हमर कोठारे को सेंट्रल अमेरिका एंड मेक्सिको रे को बाजे एटा हमर हिजबो कोन मलेशिया इंडोनेशिया रे को मैसूर का पूजा रे को सेंट्रल अफ्रीका हमर कॉन्गो बेसिन रे एटा को बाजे 97 देखबा सिलेक्ट द हॉट पेयर so far as highest productions of mineral is concerned पूछ ओडिशा आयरन और ठीक अछि राजस्थान जिप्सम ठीक अछि लिग्नाइट हमर कोन आइबो हमर तमिलनाडु हला गुजरात पेट्रोलियम ठीक अछि करेक्ट आंसर जिबा हमर सी नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन नंबर 98 which is not the reason of population explosion in India during 1951 to 1981 देखा बेटर हेल्थ केयर यदि हेबो तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हेबो तो नॉट द रीजन कहूची तो एटा हेबो नै बेटर हेल्थ केयर एटा गोटे रीजन हाई फर्टिलिटी इज आल्सो ए रीजन जन्म हार यदि हाई हेबो तो लो मोर्टालिटी यदि हेबो भी हमर कोन हिबो population explosion have so not the reason पूछी the correct answer is high food security is the correct answer number 95 which of the following is correctly matched agent देछि तापर landform देछि agent देछि तापर landform देछि glacier v shape valley कहूछि v shape valley हेबो नै एटा u shape valley हेबो हला u shape valley हेबो v shape valley कोन river करिते तापर river जुगेन कहूची जुगेनटा गुणे वन टाइप ऑफ मशरूम रॉक है तो रिवर मशरूम रॉक कहूची मशरूम रॉक एडा रिवर बने एडा विंड हे जिवो तापर विंड पॉटहोल्स कहूची एडा हमर रिवर वाटर हेबो रिवर वाटर द्वारा पॉटहोल होइते एडा भी बने ग्लेशियर शार्क ठीक अछि ग्लेशियर शार्क एडा ठीक अछि एडा ग्लेशियल इरोजन पई हे तापर 99 what is the mainly used in India's poverty line estimation तो कुछ income data wage rate assessed value consumption data कुछ the correct answer is consumption data next देखिबा 96 which of the following type of monsoon account for most of the rainfall along the Konkan coast northeast monsoon northeast तापरे साउथ ईस्ट पूछी तापरे साउथ वेस्ट मानसून एटा जिबा हमर करेक्ट आंसर हला नॉर्थ ईस्ट कोन नॉर्थ ईस्ट हमर करमंडल कोस्ट आस्ते तमिलनाडु आस्ते आ तमिलनाडु रे वर्ष को दुई थर वर्षा ऋतु होइता बेली हमें कहिथा हला तो ए सब जिनिस हेबो क्वेश्चन नंबर 100 which of the following is the cause of cost push inflation कुछ wage rise high demand एक्सेस कैपिटल ओवर पॉपुलेशन देखो हाई डिमांड जदि तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन हेबो एक्सेस कैपिटल जदि हम पाखे रहबो तो हमर डिमांड हाई हेबो तापर ओवर प्रोडक्शन जदि बेसी हेबो तो प्राइस फॉल हेबो हला प्राइस कमी जिवो दर दाम कमी जिवो ओवर प्रोडक्शन जदि तो वेज राइज जदि हेबो हमर जदि मजूरी रे मजूरी टंका जदि वृद्धि जे ताले जो हम प्रोडक्शन टा करबा तार दाम टा बढ़ाई देबा तो एटा हमर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन रे आसीते ठीक अछि वर्तमान में पेडागोजी सेक्शंस करबा एटा गुटी स्पीड करबा नहले वीडियो लेंथी हिजबा हला द असेसमेंट दैट इज टाइपिकली डन बिफोर टीचिंग टू डिटरमाइन ए स्टूडेंट्स प्रायर नॉलेज इज कॉल्ड एज फॉर्मेटिव असेसमेंट
सबमेटिव असेसमेंट, प्लेसमेंट असेसमेंट, डायग्नोस्टिक असेसमेंट। देखो फॉर्मेटिव असेसमेंट कोथि रहते हैं हमारा ड्यूरिंग लर्निंग प्रोसेस हां तापरे सबमेटिव असेसमेंट एट द एंड ऑफ द लर्निंग प्रोसेस है एंड ऑफ द लर्निंग प्रोसेस तापरे एटा हमर करेक्ट आंसर है प्लेसमेंट असेसमेंट तापरे डायग्नोस्टिक असेसमेंट जदी कहबा एटा हमर लर्निंग गैप आइडेंटिफाई करबा पे हमें डायग्नोस्टिक असेसमेंट करितो तो करेक्ट आंसर है हमर कोन प्लेसमेंट असेसमेंट तबे 104 नंबर क्वेश्चन करि देबा नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग मींस डेस नो ट्रांसफर और लेस ट्रांसफर obstruction in learning learning wrong skills learning transfer to other people एटा जे हमर करेक्ट आंसर obstruction in learning हला obstruction obstacle रहिछि obstacles means barrier बाधा सृष्टि करिबा obstruction in learning एटा जे हमर नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग जोडे को obstruction in learning रे हिते हला मींस तार अर्थ सीटा हला तापर जिबा 102 क्वेश्चन नंबर 102 which of the following is not a typical objective of continuous and comprehensive evaluation CC केउटा CC रो नुहे गुची holistic assessment of students learning reducing stress and anxiety associated with single terminal examinations तापरे कुची evaluating academic memorizations of the learners कुची तापरे D number providing regular feedback and diagnostic insights for teachers and learners कुची करेक्ट आंसर है हमर कोन सी इवैल्यूएटिंग एकेडमिक मेमोराइजेशंस ऑफ द लर्नर्स काहे देखो नॉट कोची एटर नॉट कोची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइपिकली ऑब्जेक्टिव ऑफ कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन सीसी रो हमर ऑब्जेक्टिव कोटा नुहे कोची तो एइ सब गुडा कोटे ए बी एंड टी सी टा नुहे काहे देखो हम मेमोराइजेशन वर्ड देखि तुमे एटा करि परिबो है ना एटा को हमें एलिमिनेट करि परिबा तापरे 105 क्वेश्चन नंबर 105 which is the key characteristics of portfolio assessment which is the key characteristics of portfolio assessment it provides immediate feedback through which program kuchi it is conducted solely at the end of the learning process kuchi it is as focused on academic subject taught in the school kuchi it occurs over a longer period to redemonstrate understandings of students achievement गुची the correct answer is हमर कोन D हिचो हमर correct answer हला नेक्स्ट देखिबा 103 which type of intelligence is not considered under Gardner's multiple intelligence theory bodily kinesthetic तापरे म्यूजिकल तापरे इंट्रापर्सनल कोची आउटे इमोशनल कोची करेक्ट आंसर है हमर कोन इमोशनल है हमर करेक्ट आंसर तापरे 106 a system where 90 to 100% is always an A grade regardless the class performance is relative grading criterion reference grading तापरे कोची mastery grading तापरे absolute grading correct answer absolute grading next इबा 107 cyberbullying among adolescents can be reduced by encouraging students for massive use of social media massive use of social media के करिबा हमें adolescents मान को मध्य जदी massive use of social media से माने यूज करिवे massive मीन comprehensive व्यापक बेसी excessive तो एटा हेबो नै तो ignoring online interaction एटा भी हेबो नै ignoring जेतु कहूची तापरे बैनिंग ऑल टेक्नोलॉजिकल यूजेस इन स्कूल में जदी टेक्नोलॉजिकल यूजेस न करिबा हमर पाठ्यक्रम भलो हेबो नै टीचिंग डिजिटल सिटीजनशिप एंड ऑनलाइन सेफ्टी एटा जे हमर करेक्ट आंसर 111 द स्मार्ट बोर्ड इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ प्रोजेक्टेड टीएलएम नॉन प्रोजेक्टेड टीएलएम ऑडियो टीएलएम इंटरैक्टिव डिजिटल टीएलएम एटा निश्चित भाबरे जानुथबा एटा जे हमर इंटरैक्टिव डिजिटल टीएलएम इज करेक्ट आंसर 109 who defined intelligence as the aggregate or global capacity of the individual to act purposefully, to think rationally and deal effectively with the environment. Option David Wessler, तापरे George Stoddard, तापरे Robert Sternberg, तापरे L.L. Thornstowe. Correct answer है हमर कोन A.
डेविड वेस्लर है हमरा correct answer. When adapting curriculum for dyscalculia, a teacher should dash give more complex numerical problem. तापर कहूँ use manipulative like blocks, counters, abacus. तापर remove mathematics completely. तापर use only textbook methods. Correct answer है हमर कौन B. Use manipulative like blocks, counters, abacus. When adapting curriculum for dyscalculia, a teacher should देखो dyscalculia means related to calculation, math related to math. तो a teacher should कौन करिबा उचित use manipulative like blocks, counters, abacus. माने abacus को देखिए जानी परिबे सेटा. Next 109. What method did Kohlbergs primarily use to assess moral reasoning? Survey, observation, interview, तापरे कुछ experiment. Correct answer is interview. 113. Which assessment tool provides a systematic collection of students' work over time? Rating scale, questionnaires, तापरे portfolio, interviews, schedules. Correct answer is हमरा C. Portfolio. Next by 110. Which of the following is not a stage of moral development in Kohlberg's theory? Obedience and punishments orientations, good interpersonal relationships, self-actualization, social contract orientations. Correct answer है हमारा self-actualization. Self-actualization coined किए करथिले जदि कहबा हमें गोल्डस्टेन करथिले हला याकू पॉपुलराइज किए करथिले अब्राहम मास्लो हला. तो करेक्ट आंसर है हमारा सी. तो ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन देखो नॉट अ स्टेज कुछ हला नॉट अ स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट इन कोलबर्ग थ्योरी. तापरे एटा ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कुछ और सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन बराबर कोलबर्ग थ्योरी रे जीव एटा हमर एटा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है हला. 114. Rubrics typically consist of A number option numerical marks only, B number option levels of performance with clear descriptors, तापरे कुछ anecdotal notes only, तापरे yes no check boxes. तो correct answer B. Levels of performance with clear descriptors. तापरे हमें आसीबा 150 number question हला. In 5P instructional model explain implies देखो 5P टा हमर कोन हमर engage हला engage तापरे explore एटा समस्त जानि छ हला explore तापरे explain तापरे elaborate तापरे हमर हिला evaluate. जो explain टा कोछि explain in 5P instructional model explain implies providing opportunity for students to articulate their understanding. B number option extending students understanding through new experience, allowing students to investigate and build their own understanding. तापरे कोछि capturing students interest and curiosity. Correct answer is हमर providing opportunity for students to articulate their understanding is हमर correct. 119. Critical pedagogy was propounded by B.F. Skinner, तापरे Sigmund Freud, तापरे कोछि जीन पियाजे. देखो एटा हमर हिजबो ए नंबर ऑप्शन जदि कहबा B.F. Skinner तो हिजबा हमर कोन behaviorism रे जिवो हला. सी नंबर ऑप्शन जदि कहबा से जिवे साइको एनालिसिस रे ना तापरे जीन पियाजे जिवे कॉग्निटिव रे
है कॉग्निटिव डेवलपमेंट रही तो पौलो फ्रेरी ही जीवा हमर करेक्ट आंसर है तापर नेक्स्ट जीवा नेक्स्ट 120 को कर प्रथम which of the following is true about good TLM they should be expensive they should be large and colorful they should be age appropriate and contextual they must be digital because they should be expensive दामिका है नहीं they should be large and colorful large कहीं colorful चलिए large हमको दरकार नहीं जितने हमको दरकार से करिबा लार्ज कहीं करिबा दे शुड बी एज एप्रोप्रिएट एंड कॉन्टेक्सचुअल देखो कॉन्टेक्सचुअल को छी और एज एप्रोप्रिएट सीटा करेक्ट है दे मस्ट बी डिजिटल नहले भी चलिबो है ना तो करेक्ट आंसर है हमर 116 द कोर कंपोनेंट ऑफ स्कूल बोर्ड मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स टेस्ट ऑटोक्रेटिक लीडरशिप एम्पावरिंग इंटरनल स्टेकहोल्डर्स स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू स्टेट mandates तापरे eliminating performance accountability the correct answer is हमर कोन correct answer is b is हमर correct answer next 170 को देखिबा cooperative play is typically seen during which stage infancy early childhood later childhood तापरे adolescence the correct answer is हमर कोन b and c both is b and c is both हमर correct answer 121 students are asked to set goals track progress and evaluate their strategies this test represents assessment for learning तो formative है ना assessment as learning assessment of learning का हमारा summative result है तापरे summative assessment summative b and c टा हमारा summative assessment रे वाला तापरे हमारा एडे formative रे वाला तो students are asked to set goals track तापरे progress and evaluate their strategies it has assessment as learning result assessment as learning result एटा देखि देला नेक्स्ट जीवा 118 which of the following steps should be taken by the teacher for behavioral changes of an adolescent punish the students ignore the behavior communicate privately and empathetically contact parents immediately without talking to the students एटा जना पड़ी जुछे हला सी इज योर करेक्ट आंसर कम्युनिकेट प्राइवेटली एंड एम्पैथेटिकली हला पनिश द स्टूडेंट्स हबो नहीं इग्नोर द बिहेवियर हबो नहीं तापरे कांटेक्ट पेरेंट्स इमीडिएटली विथ टॉकिंग टू स्टूडेंट्स को बुझिन विचार स्टूडेंट्स को न पचारिबा कारण कोन से तार बिहेवियरल चेंज होई छी हला यदि न पचारि ता पेरेंट्स को डायरेक्ट कॉल करिबा ठीक नुहे तो कम्युनिकेट प्राइवेटली भी करिबा कथा हला हम समस्त सामने भी जदि तांकु कहिबा से इंसल्ट फील करि पारंती तो कम्युनिकेट प्राइवेटली एंड एम्पैथेटिकली कुछ एटा करेक्ट है 122 टीचर में टेस्ट आर जनरली characterized by a high reliability and standard scoring procedures कुछ uniform administration and standard norms कुछ flexibility and alignment with classroom objectives being nationally norms reference कुछ correct answer is हमारा C flexibility and alignment with classroom objectives next 123 by using vocabularies and concept given by teacher a student writes a poem on his or her own which of the following cognitive area is achieved as per Bloom's revised taxonomy remembering applying creating evaluating डायरेक्ट आंसर करिबा क्रिएटिंग ही जो हमरा करेक्ट 126 व्हाट इज द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कूल डेवलपमेंट प्लान टू क्रिएट अ हेल्दी ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट इन स्कूल टू कैटर द नीड्स ऑफ द disadvantaged group students to make provisions for adequate financial resources to make community accountable for school development the correct answer is to create a healthy organizational climate in school 124 who believe that action and direct observations were the best way to educate children Frederick Powell
जॉन डिवी तापरे मारिया मोंटेसोरी तापरे लेव वाइगोट्स्की द करेक्ट आंसर इज हमार जॉन डिवी 127 heredity influences development because it does it is the sole determiner of human development provides the biological blueprint cannot be changed by external factors is not always more important than environment. Correct answer is B. Provides the biological blueprint. 125. Which is the highest form of internal stakeholders participation in school based management? तो आम डायरेक्ट आंसर करदेबा ऑप्शन गुड़ा लिख दिए स्टूडेंट्स आर हेल्ड अकाउंटेबल फॉर देयर परफॉर्मेंस रिपोर्ट the child first learn to control the head before the light this statement illustrates differentiation principles कौची integration principle proximodistal principle proximodistal टा कोन center to periphery मीन्स देख गोटे छुआ प्रथम कौन कर होल हैंड्स को से मूव कर धीरे 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 आमर पेरीफेरी पेरीफेरी मीन्स टिप है आमर फिंगर फिंगर को कंट्रोल कर तो प्रोक्सिमोडिस्टाल से सेफालोपोडाल आमर करेक्ट आंसर है हेड टू टू पड़ी थी Next, 129. The innate language theory by Noam Chomsky was devised on dash. Language acquisition device and universal grammar, language acquisition device and behavioral reinforcement, language acquisition device and parental language input, language acquisition device and cognition. The correct answer is A. 132. Private speech in Vygotsky's theory refers to a speech used only in private speech, talking oneself to guide thinking and behavior. It is our correct answer. A duita C and D ever नहीं तो उसका पढ़िबा आवश्यकता भी नहीं 133. Arranging items from easy to difficult is done to follow which principles? Fairness, objectivity, balance, proper sequencing. The correct answer is हमारा proper sequencing. Next is 130. In Erikson stages of psychological development, what is the primary psychological conflict during adolescence? Trust, mistrust, autonomy versus shame and doubt, identity versus role confusion, intimacy versus isolation. The correct answer is our कौन identity versus role confusion हला ए नंबर ऑप्शन एटा कोठी रही स्टेज 1 इन्फेंसी तपरे बी नंबर जदी कहबा अर्ली चाइल्डहुड हला अर्ली चाइल्डहुड रही थे बा टडलरहुड कहता मु हमें स्टेज 2 रही थे इंटीमेसी एंड आइसोलेशन टा हमर स्टेज 6 रही थे यंग एडल्टहुड समय हला 134 which of the following is not a recognition type test true false test matching test multiple choice question sentence completion test हला एडा सहज प्रश्न अछि करेक्ट आंसर आइबा हमरा सेंटेंस कंप्लीशन रिकॉग्नाइजिंग रिकॉग्नाइज अर्थ कोन चिन्हिबा ट्रू फॉल्स रे केवल चिन्हिबा ट्रू फॉल्स मारिबा मैचिंग टेस्ट भी हमें क स्तंभ थिबो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रे भी हमें कोन करबा रिकॉग्नाइज करिबा हला तो डी नंबर सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट हमको रिकॉग्नाइज करबा को पड़े नहीं हला हमको चिंता करबा को पड़े भाईबा को पड़े हमें जोटा मने पकई की लिखि हला तापरे 131 कोन देखो स्कैफोल्डिंग इन लर्निंग रिफर्स टू allowing students to learn independently without support of teachers the kind of scaffolding है वो नहीं allowing students to discover everything on their own है वो नहीं giving students
अनलिमिटेड हेल्थ थ्रू आउट लर्निंग एटा भी माने प्रोवाइडिंग टेम्पररी सपोर्ट जोटा को हमें कहथु एमक्यू मोर नॉलेजेबल अदर टेम्पररी सपोर्ट किए देथांती एमक्यू मोर नॉलेजेबल अदर पर्सन देथांती दैट इज ग्रेजुअली विथड्रॉन हा एटा जो हमरा डी 135 a school that allows teacher to form committees to manage extracurricular programs while the principal focuses on administrative policies demonstrate policies demonstrates dash कुछ autocratic manage centralized management तापरे कुछ decentralized management लाइसे ही fair management तो करेक्ट आंसर है हमारा सी सी है जो हमारा करेक्ट आंसर 36 the SCERT is primarily responsible for conducting secondary board examination implementing teacher training programs and curriculum development at the state level तापरे organizing teacher eligibility test तापरे allocating funds to school the correct answer is हमारा कौन implementing teachers training program and curriculum development at the state level 139 what is the full form of PARAK described in NEP 2020 डायरेक्ट हमें आंसर करिबा परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट 137 according to cognitive development theory of Jean Piaget at which stage a child develops logical thinking of tangible objects sensory motor stage pre-operational stage तापरे concrete operational stage तापरे formal operational stage तापरे केते केते बेले हमर एज भी पचारि दी मन रखबो हमर सेंसरी मोटर स्टेज बा 0 to 2 प्री ऑपरेशनल स्टेज हमर 2 to 7 हला तापरे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज हिकला 11 प्लस हला तो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज हिबा हमर 7 to 11 स्टेज हला तो करेक्ट आंसर सी नेक्स्ट 140 which of the following is also known as curricular validity content validity predictive validity construct validity concurrent validity test construction ru gote gote mark access ho gele eta dekhi eta jiba amar correct answer content validity tapore 141 a blueprint is developed in order to dash ensure content validity of the test tapore determining scoring procedures decide the time limit provide distractors for MCQs correct answer ensure content validity of the test 138 the book syntactic structures published in 1957 is authored by Noam Chomsky B.F. Skinner John Y.B. तापरे Lev Vygotsky correct answer Noam Chomsky 142 the principles of validity in test constructions ensure that the test gives consistent results on repeated use measures what it intend to measure is easy for the majority of students is easy for administrations correct answer is hamara B measures what intends to measure 143 according to Erickson the basic strength developed during the stage of industry versus inferiority hope purpose will competence competence 147 a good teacher is one who dictates good notes to students maintains strict disciplines and avoids students interacting outside the class encourage curiosity critical thinking and active learning tapore avoid classroom interaction correct answer is hamara C encourage curiosity critical thinking and active learning
144. Which of the following best represents stage 6 reasoning in Lawrence Kohlberg's moral development theory? I follow the rule because everyone must follow it. I help because I will get a reward. I act according to my internal justice principles. I obey so others will praise me. The correct answer is C. 148. School-based management is primarily based on which management principle? Division of labor, centralization, participatory governance, autocratic control. It's C. 149. Which of the following is not an example of intrinsic motivation? Curiosity about a new topic, love for reading novels, writing homework for praise from the teacher, interest in solving puzzles. Correct answer is C. Writing homework for praise from the teacher. 145. On what approach is critical pedagogy based on? Problem solving approach, teacher centric pedagogical approach, straight approach, constructivist approach. Problem solving approach is the correct answer. 146. NEP 2020 recommends 10 days period as backless day for students for which class? NEP 2020 recommends 10 days period as backless day for students of which class? 1 to 5, 1 to 8, 6 to 8, 1 to 10. Correct answer C. 150. Which of the following methods is most associated with teacher-centric learning? Lecture method, role play, project method, problem solving method. एडा कमेंट रे लेख निजे है। थैंक यू, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।